नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मार्केट्स एक बार फिर गिरावट पर है क्योंकि इन्वेस्टर्स का ध्यान बाद में अमेरिका से इंपॉर्टेंट जॉब डेटा पर केंद्रित हो गया है। बिटकॉइन $27,500 के निशान के करीब ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.1% की बढ़त के साथ 35,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यहाँ ये है कि एनालिस्ट ने कीमतों में हालिया उतार चढ़ाव के लिए ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट की ओवरऑल स्टेबिलिटी को यूएस जॉब मार्केट की स्लो ग्रोथ रेट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच FTX के पूर्व चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और को फाउंडर गैरी वांग ने एक जूरी को बताया कि उन्होंने बैंकमैन फ्रीड और साथ ही पूर्व एग्जीक्यूटिव कैरोलीन एलिसन और निशात सिंह ने कई प्रकार की धोखाधड़ी की। निकट अवधि में कीमतों में उतार चढ़ाव स्पॉट BTC ETF पर SEC कमीशन के फैसले पर निर्भर करेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि SEC 3 से 6 महीनों में बिटकॉइन स्पॉट ETF को मंजूरी दे देगा। एक दिलचस्प खबर में बिटकॉइन ETF की मंजूरी से 3 वर्षों में $150 to $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो सकती है, जो संभावित रूप से बिटकॉइन प्रोडक्ट के माध्यम से मैनेज्ड करंट अमाउंट को 2 गुना या फिर 3 गुना कर देगी। JP मॉर्गन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इथेरियम नेटवर्क अधिक सेंट्रलाइज्ड हो गया है और मर्ज और शंघाई अपग्रेड के बाद ETH स्टेकिंग में वृद्धि की वजह से टोटल स्टेकिंग यील्ड में कमी आई है। आगे बढ़ते हुए एक प्रमुख क्रिप्टो ट्रैकिंग पोर्टल व्हेल अलर्ट ने XRP टोकन के एक महत्वपूर्ण मूवमेंट का पता लगाया है, जिसमें साउथ कोरिया सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अपबिट से $10.45 मिलियन वैल्यू के 20 मिलियन XRP वापस ले लिए गए हैं। फिर टोकन को एक डजन छोटी किश्तों में वितरित किया गया, जिनमें से हर में औसतन 500,000 XRP थे। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.4% की वृद्धि के साथ $1.08 ट्रिलियन पर था। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम 5% बढ़कर $25.3 बिलियन हो गया। आगे बढ़ते हुए क्रिप्टो ट्रैकर व्हेल अलर्ट ने बिटवेवो एम्स्टरडैम से एक अनोनिमस ब्लॉकचेन एड्रेस पर 4.5 ट्रिलियन शिबा इनू मीम कॉइन के महत्वपूर्ण ट्रांसफर की सूचना दी। $33 मिलियन वर्थ का ये स्थानांतरण व्हेल अलर्ट द्वारा रजिस्टर किया गया था और इसने रजिस्टर को शॉक और सरप्राइज में डाल दिया है। ये ट्रांसफर एक इन्वेस्टमेंट टूल के रूप में शिप के महत्व पर प्रकाश डालता है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में वृद्धि हुई क्योंकि ट्रेडर्स ने दिन के अंत में निर्धारित यूएस जॉब्स की रिपोर्ट का इंतजार किया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 27 पॉइंट्स या 0.1% की बढ़ोतरी हुई। S&P 500 फ्यूचर्स और नास्डैक 100 फ्यूचर्स में भी 0.1% की बढ़त दिखी। बिटकॉइन 0.2% की बढ़त के साथ $27,720 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.2% की गिरावट के साथ $1,635 पर ट्रेड करती दिखाई दी। सोलाना सोल 2% की बढ़त के साथ $23.5 पर ट्रेड करता नजर आया, तो वहीं कार्डानो का एडीए टोकन 2% की बढ़त के साथ $0.26 पर ट्रेड करता नजर आया। बात करें एवलांच रिवैक्स की तो वह 4% की बढ़त के साथ $10.6 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.2% की बढ़त के साथ $0.061 पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि BNB 0.1% की गिरावट के साथ $212 पर ट्रेड करता दिखाई दिया, तो वहीं पॉलीगॉन मैटिक 1.2% की गिरावट के साथ $0.55 पर ट्रेड कर रहा था। शिबा इनू 0.3% गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया। रिपल का XRP टोकन 0.2% की गिरावट के साथ $0.52 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 0.1% गिरावट के साथ $4 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 मार्केट से जुड़ी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the Metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.
Industry experts predict a rise in the likelihood of the SEC and approving a spot-based Bitcoin exchange-traded fund following the approval of America's first Ethereum future ETF. This confidence is bolstered by the recent approval of America's first ETF. Crypto trader Alex Kruger predicts a 70% chance of spot Bitcoin ETF approval in Jan, stating that it is credible. He compared crypto traders to selling the news professionals, stating that selling the news requires front-running. ETF Store President Nate Geracki emphasized the launch of Ether Futures ETF despite the anticipated approval of spot ETFs in the near future. Crypto Rover and Bitcoin therapists predict that the SEC will be forced to accept a spot Bitcoin ETF after Ripple's partial victory against the SEC. They believe the SEC will continue to use the crypto fraud scapegoat, but the approval of the ETF is expected to generate trillions of dollars. Former BlackRock director claims SEC will approve spot Bitcoin ETF within 3 to 6 months, with potential capital inflow of up to $200 billion. Bloomberg ETF expert Eric Balchunas announced that the SEC's appeal deadline is October 13 and spot filing are expected to be delayed until January 3. Despite a crypto bear market, recent approvals and ETF launches of Ether futures have increased institutional investors' interest in Ethereum, the second largest cryptocurrency by market cap. On October 2, Ether futures began officially trading 6 financial products with net expense ratios. These include Bitwise Ethereum Strategy ETF, Bitwise Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF, ProShares Other Strategy ETF, ProShares Bitcoin and Ether Equal Weight Strategy ETF, Bitcoin and Ether Market Cap Weight Strategy ETF, and VanEck Ethereum Strategy ETF. James Butterfield, head of research at CoinShares Go, reported a $13 million institutional inflow in Ethereum products by October 4, marking the first net positive week in a 7-week run. This inflow is less than $200 million for Bitcoin during ProShares Bitcoin Futures ETF launch in 2021, attributed to the current bearish market cycle rather than the Eurofic bull market. Institutional investors are still experiencing a bear market with 24 weeks of net negative flows out of 39 weeks total since 2022, according to CoinShares data. Ethereum saw a $101 million outflow year to date, while Bitcoin had a $219 million inflow. However, weekly and month-to-date flows for both assets were similar, with $16.4 million and $12.9 million inflows, respectively. Introduced in January, ordinals experienced moderate growth but have since exploded, with nearly 35 million inscriptions minted until September, according to Galaxy Research, a blockchain analytics firm. Bitcoin ordinals, despite being primarily fueled by digital artifacts or image-based files, saw a faster growth in its early stages when focusing on image-based inscriptions. During its first 200 days of activity, Bitcoin minted around 1.14 million digital artifacts compared to Ethereum and Solana, which experienced slower minting activity since the debut of NFTs. Ordinals experienced significant growth during the NFT crypto winter, according to Galaxy Research. Despite the bear market, ordinals gained traction and the concept of digital artifact on Bitcoin. NFT trade volume dropped significantly in 2023, with ordinals accounting for 18% of all NFT volumes in May. Despite dropping out of the spotlight, ordinals contributed significantly to Bitcoin's NFT activity. Bitcoin became a popular spot for trading digital artwork, with the third highest NFT trading volume in Q1 2023, surpassing major players like Polygon, Matic. Ordinals frenzy also increased network activity, peaking in May due to the bulk minting of BRC20 tokens. Ethereum and Solana trailed behind.